जहाँ भी है तू वहीं से आ रहा, कोई कहानी शुरू तो कर। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में गीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। जोश में जना सनसनाई जना, हम रुकेंगे ना, पल मिटाई जना, पल मिटाई जना, हम झुकेंगे ना। मैं लड़ जाना, मुझे कुछ लोग, मैं गर्व से अपना सर उठाकर चलती हूँ, हाँक में स्त्री। The phoenix has risen from the ashes. Beyond fear, life is limitless. Woman is the strongest pillar on earth. Once she becomes fearless, life becomes limitless. A strong and successful woman is one who can build a firm foundation with the bricks that have thrown at her. Thank you so much. Please be seated. Please. Please be seated. Ladies and gentlemen, please be seated. I request you to kindly put your mobile phones on silent or. आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है. This is मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ. It is a story of a woman who has broken the norms of patriarchy. जहाँ कहा जाता है कि आपकी तकलीफ़ें, आपकी पेन्स, आपकी डेस्टिनी है. It is a story of a woman who has made people realize that if you think life is hard and you are not able to cope up, just think again. Think again, because in this way, if you are thinking like that, you are doing injustice to yourself. It is the story of a woman who has unleashed her potential and raised the bars for women as a role model. It is the story of a woman who has helped women and healed mothers of special children who are thinking they are not worthy. It is the story of a woman who has raised her voice against injustice. Yes, today I'm going to share that story with all of you, and that's my story, the story of the woman power unleashed, the story of the phoenix who has risen herself from the ashes. Well, where are my parents? My dad is in front of me, my mom. We are middle class family people, Delhi based, and my elder sister, she is in front of me right now. We are two sisters, and हमारे पेरेंट्स ने हमें बिल्कुल लड़कों की तरह पाला. बचपन से हमें यही शिक्षा दी कि हमारी जेंडर इक्वालिटी पे कभी भी हमने नहीं सोचा कि हम लड़कों से कम हैं. हमने लड़कों से ज़्यादा ही काम किए बचपन से. फ्रॉम क्लास 6 से मैं लोकल ट्रेन में जाती थी. तो स्ट्रगल्स मैंने देखी, बट वो हैपनिंग लाइफ और हैप्पीली फैमिली वाला हमने शुरू से देखा. तो 6th क्लास से मैंने देखा कि इंडिपेंडेंट की तरह कैसे जिया जाता है, किस तरीके से स्ट्रगल्स को हैंडल किया जाता है. लोकल ट्रेन में जाना, स्कूल, उसके बाद रिक्शा करना, पहुंचना, बारिश हो जैसे भी हो, स्कूल पहुंचना अकेले. 6th क्लास से टिल 12th क्लास आई वाज गोइंग. देन मेरे डैड को बहुत पसंद है कि मैं बहुत पढ़ाई करूं. सो मेरे डैड ने मुझे कहा MA भी कर लो, MBA भी कर लो, पढ़ाई कर लो, आर्किटेक्ट भी, मैंने सब किया. MA, MBA, मल्टीपल डिग्री होल्डर. मुझे भी बहुत पसंद, बिकॉज स्कूल टाइम से ही आई वाज लाइक लिटिल स्टूडियस, एंड प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी मैंने स्कूल में नहीं छोड़ी, स्पोर्ट्स एंड डिबेट्स, एवरीथिंग आई डिड. एंड ऑलराउंडर स्कूल में रही, विच वॉज बहुत अच्छी लाइफ जी. उसके बाद कॉलेज टाइम वॉज वेरी गुड, एंड काफ़ी स्टडीज़ कर ली. देन मेरे डैड को शौक था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट फॉर 1 year. 1 साल मैंने IAS की तैयारी की, बट आई फेल्ड. मैं वो क्लियर नहीं कर पाई. एंड उसके बाद फिर मैंने एज हो गई, जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि लड़की की एज हो रही है 24-25 years, शी हैज़ टू गेट मैरिड.
अदरवाइज़ कोई लड़का नहीं मिलेगा और शादी नहीं होगी तो फिर दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी कि अगर लड़की की शादी नहीं होगी। सो समहाउ शादी हो गई, आईएएस का एग्ज़ाम का बीच में छोड़ दिया, तैयारी की, नहीं हुआ। देन समहाउ शादी के बाद की लाइफ, ज़िंदगी को कुछ और मंजूर था कि ज़िंदगी का पलटना मंजूर था। जो मैंने देखा अपनी दुनिया में अपने पेरेंट्स के साथ जो लाइफ जी, उसका ऑपोजिट मिला मुझे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे ड्रीम्स वर क्रैशिंग डाउन एवरी सिंगल डे ऑफ अ हैप्पीली मैरिड वुमन। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम domestic harassment, mental harassment, domestic violence, abusive relationship, and a lot of blame games, and a rigid environment, closed environment completely, where a female doesn't have the right and is not valued at all. So every day I was dying, every single day. I was not able to understand what do I do. मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, मेरा घर कौन सा है। मेरे पेरेंट्स के घर जाऊंगी तो बोला जाएगा कि शादी हो गई है, वापस आ गई घर पे, दुनिया क्या कहेगी। 15 साल तक मैं यही करती रही। आई हैव कम बैक 50 बार, कम से कम 50 times आई केम बैक टू माई पेरेंट्स हाउस एंड अगैन गॉन बैक, लिव्ड अ लाइफ लाइक अ शटल कॉक। आज इधर, कल उधर, 2 दिन उधर, 4 दिन उधर। एक दिन बैग पैक किया, उधर पहुंच गई, दूसरे दिन बैग अनपैक किया, इधर। तो ये ज़िंदगी मैंने जी। In between, 2 children were born. My eldest son, who is a boy, I bless him. I love him so much. If he's listening to me, I love you, beta, and may God bless you the whole of your life. I love you till the end of my life. He's a boy of 16 years. Very, very intelligent boy. Rock star, actually. He has been brainwashed completely, and he turned against me. And my second child, she's in front of you. She's born with cerebral palsy, 100% brain hemorrhage, with intraventricular brain hemorrhage. She was the only child in the ICU for 21 days on ventilator. She was surviving for her mother. She was the only one, because मैं जितने बच्चों को देख रही थी वो मेरे सामने, they were dying like anything and they were packing in the plastic bags, एक एक zip करके मॉर्चरी में, एक एक zip करके। तो I was thinking कि मैं यहाँ से कब बाहर निकलूँगी इसको लेके। So 21st day when she opened her eyes and she saw me, I took a breath. Yes, she's the warrior child. She's there. She has come in my life for a purpose. The day came, doctors gave me a certificate in my hand. गंगाराम से तो मैं इसको ले आई, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर सेड she cannot recover ever. She is a 100% disabled child. Signed and stamped. ले जाओ, अब आपकी मर्जी। वो सर्टिफिकेट मेरे हैंड में दे दिया। Now every day I was the one, उसको रात को देखना, दिन में देखना, बिकॉज शी कैन नॉट टेक एनी थिंग। आप देख ही सकते हो कि ये कुछ नहीं कर सकती। सो उसको कब सीजर्स आ रहे हैं आधी रात को मुझे नहीं पता होता, तो बट मुझे सेंस करना पड़ता है और मेरे को रात को जागना होता है, इसलिए कि ये कहीं इसको सीजर ना आ जाए, बिकॉज रात के मिडनाइट में इसको सीजर्स आते थे बहुत ज़्यादा। 10 years, now she is 10 years now, and she is a happy child since her birth. After 10 years, abhi recently in 2019, I came into spirituality. Varun Jain is there. I want to give him a gratitude जिन्होंने मुझे प्राणिक healing में लाया. I came into spirituality at that time, and the journey started of spirituality. मुझे चिकन पॉक्स हो गया 2019, and I called up सुशील जी को सुबह कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे चिकन पॉक्स है, आई विल गो टू द डॉक्टर। देन माय पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड मी इन चिकन पॉक्स, एंड माय होल बॉडी वाज फुल ऑफ wounds, scars, and lot of pain. So I was in unconscious state for 6 days.
and the hospital. मुझे नहीं पता मुझे मेरा फर्स्ट डे कब था और मैं छठे दिन कब पहुंच गई. 6th डे की ज़िंदगी मैं ऐसे ही निकालती जा रही थी. 15 साल हो गए. 15 साल के बाद 6th डे मेरी सोल ने मुझे कहा, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू सफरिंग? यू आर नॉट मेंट टू सफर. You are not a woman to suffer anymore in this world. You are a warrior woman. You have to come up. You have to get up and you have to raise the phoenix in yourself and empower other women. You have to raise yourself from the ashes. You are not a woman. The 6th day, I left my house. From the hospital, I left my home and took a rented house near to my parents. ताकि इसकी केयर हो सके और मैं दिन में जॉब कर पाऊँ. And I can take care in the night. And they are taking care during the day. So I left my home in 2019. I never gave up on myself. I never gave up on her. That this is not my life. I can't live like जहाँ पे ये कहा जाता है कि औरत की तकदीर जो है वो पहले से लिखा के लाई है कि वो उसकी डेस्टिनी बन के आई है. मैंने वो नॉर्म्स तोड़े हैं. हाँ मैं तोड़ी हैं. एंड आई एम अ प्राउड इंडियन. यस ये नॉर्म्स एक वुमेन के लिए अगर वो लेके जीती है तो वो जी नहीं पाएगी इस तरीके से. एवरी डे शी विल डाई एवरी डे. और आई हैव वर्कड सो हार्ड. आई वर्कड 18 hours a day. After that I challenged myself to stand in the contest of Mrs. India 2020 where I met Rita Gawani ji. Thank you so much. And at the same time I got connected with you. Thanks a lot for coming in my life and lots and lots of gratitude to you. So I got the title of Hot Model India World 2020. Every day I challenged myself. I learned again, relearned to become a life coach to help women who are suffering from indignity, disrespect, domestic violence, toxic dependence, not to actually. So that's how my life started and the core values I connected. And my purpose at the same time got decided to help women suffering from indignity, disrespect, toxic dependence. And I believe that I can plan out a specialized wellness center for women to raise their self-esteem in the next few years of time and to be the lighthouse for women, to take them from victim to a victory stage because they are enough, they are worthy, they have the power in themselves. They don't have to take the power because women are already self-empowered. They have to just unleash their potential from within. And thank you so much, Sushil ji and all the family. I first of all give a gratitude to my first family, which is Morpen family, because आज वो ना होते तो मैं यहाँ ना होती. कि जो मैंने सीखा है इतने सालों में मैंने उन्हीं लोगों से सीखा है. जो प्यार उन्होंने दिया, जो केयर उन्होंने दी, जो सपोर्ट उन्होंने दिया है, लाइफ टाइम आई हैव नेवर एवर लर्नड, जो मैंने उनसे सीखा है. एंड the joy of growing together, you know, the tagline of joy of growing together, the means is that we are growing together. So each and every word I owe कि वो उस चीज़ को हमारी जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करता है वो छोड़ के नहीं जाता यहाँ से. मॉर्टमैन से आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई यहाँ से छोड़ कर गया है because the love, the unconditional support and care they give, I have never ever found in any company. And big That's how I started my journey from Morpen. And Morpen में बहुत पुरानी, बट मैं कॉर्पोरेट मास्क लगा के ज़रूर चलती थी ऑफिस में कि फ्रंट में कुछ और हूँ बट घर में कुछ और. तो वो लाइफ में जो मास्क लगा के चलते हैं ना हम कि घर के अंदर तो जाके रो रहे हैं बट फ्रंट में आपको वो फेस ऑन करना. येस आई फेस्ड ऑन. आई एवरी डे आई वाज स्माइलिंग, आई वाज गिविंग दैट जेनिथ. बट द थिंग इज़ कि अंदर से टूटी हुई थी. अंदर से एवरी डे आई वाज नॉट लिविंग माई लाइफ. मैं ये थी नहीं. तो उस टाइम पे दे वर द बिगेस्ट सपोर्ट इन माई लाइफ. एंड नाउ दिस स्टोरी ऑफ माइन व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस, आई started on all channels
on podcasts, Google, Anchor, Spotify, Apple, everything started on podcast. So a lot of foreigners got connected, a lot of global women got connected with me. And I took a coverage on social media on all platforms, and YouTube, Facebook. I started my journey. My journey got published in South Africa in Bright and Shine Global magazine. Then Fearless and the Limitless Woman. So a lot of women got connected and they got inspired from me, and they were taking a lot of learnings from others, because everybody was coming out from the domestic violence. They were inspiring others. So that's how I got connected with them. And I took a lot of webinars, coachings, and on women empowerment, and lots of sessions on how to raise self-esteem. And in Sura, like online platforms, I have covered all the platforms, and how to actually raise your self-confidence and not to suffer from your domestic violence. And then I took interviews, live shows on YouTube, and I take the journeys of the women who were suffering and who came out from that, from USA, South Africa, Nigeria, Australia. So I have covered almost 37 episodes on my YouTube, Facebook. I do live streaming as well. And I covered almost global countries in women, and got the testimonies from global women all over the world. And they have really done their part in coming out from adversity to advantage. And they are helping a lot to other women of the world. So this is a woman word, and everybody has to actually. And I thank you, Dr. Harbeen Arora, who's not present today. And I got the proposal of National President of Wiki at Culture and Tourism. Culture and Tourism is like passion is my, travel is my passion, yes, of course. I handle travel. So somehow उनको लगा कि मैं travel industry की हूँ, साथ में तो उन्होंने मुझे travel का background दे दिया, साथ में President of India, Culture and Tourism. And thank you so much, Harbeen ji, if you are listening to me. And we are live as well on YouTube, Facebook and LinkedIn. So live चल रहा है ये show साथ में. So she's not in India, so that's why she's not able to come. She's listening to me. And then my story got published in Mailux Magazine UK. So she got again she said that I'm very inspired with your story, and she published in their magazine. And recently I got the award of Women Achievers Award from Atmanirbhar Bharat for nation building, because this is how we are empowering each other. This is how we play our part to make the nation bright. International Achievers Award 2021 to stop domestic violence with a vision. Women Power Influencer. Recently I went to Bombay, in Bombay Stock Exchange. They awarded me with a Women Power Influencer of 2021. And thank you so much, Bombay Stock Exchange. Thank you so much, Millennium Divas, for this award. I'm really blessed. Thank you so much. Thank you so much, Sense India, Blind Child, for I helped special children, blind children, for their ration kits. So they have certified me. Thank you so much, Sense India. And if Varun is there, and I got connected with MCKS, Food for the Hungry Foundation, and for the pranic healing from Grandmaster Chokoksui. Thank you so much. I just respect you, and he is listening to me. Thanks a lot. And this is how my special daughter has come. She has come with a message. Why she has chosen me, and why she has got something from heaven. Yeah, let me just read it out. Yeah, shall I? Let me just read the letter, what she has got in this red packet. Heaven's very special child, Prabjot Kaur. Why she has come?
what was the reason behind. A meeting was held quite far from earth. It's time again for another birth. Said the angels to the Lord above, this special child will need much love. Her progress may seem very slow and she will require extra care. From the folks she meets down there, she may not run or laugh or play. Her thoughts may seem quite far away. In many ways she won't adapt and she will be known as special child. Oh, let's be careful. Where is she sent? We want her life to be content. Please, Lord, find the parents. Thank you so much. And today, exact 9 months, before 9 months, thank you so much, Vishwaji, who came in my life, and I got to know in my coaching session that I want to be an accomplished author. And 9 months back, I met him. Yes, I want to be an accomplished author. Is this dream coming true? Today the dream is coming true. And today is the delivery day. Today the phoenix is coming, and I want the women who are listening and who are actually there, who are suffering, कि इस देश में लाखों ऐसे फीनिक्स पैदा हों, ऐसी फीनिक्स पैदा हों कि उनको कोई भी इंडिग्निटी का सामना ना करना पड़े आज के बाद. So this is how the story of the phoenix started. Thank you so much, Vishwaji. He has guided me so much, and I can see, if I can see you, can you please? Thank you so much.